So the topic for discussion today is basically, as we all know, this there was a terrorist attack in Kashmir, and there are talks of military action from India side, and obviously there will be some reaction from India. So our topic of discussion is not to discuss the military action, whether it should be done or not, and the political part of it or the military part of it, but then the focused discussion point is how it will impact the market, stock market. Okay. And how does one safeguard his or her investment in this scenario? And is there a possibility that you can actually make some profit because of this volatility? Okay. So that is what we are trying to understand. And for that, we have to look at some best portfolio management practices. I am getting a lot of queries from people that what should be done in this type of scenario. Okay, so there are a lot of points to be understood and discussed. So let's move on. So as we normally do, everybody is on mute. So just to keep the session flow smooth, anybody has any query, you can put it in the chat box and I will try to respond to that. Okay. As I said, we are going to discuss about strategies to safeguard in the volatility or whenever there is a big fall in the market. So as you might be aware, if in case you are tracking the market on a daily basis, last Thursday, Friday also there was a fall in the Indian market. Okay. Whereas the global market, US market, Europe market, most of the other Asian country market, they were all in green. They were doing all good. There was good rally in the US market, particularly we can see it on the charts also. But India market, Thursday and Friday, both the days it was down. In fact, Friday the fall was quite big, although there was some recovery. So the point is, no action has been taken so far. Okay, it is just there is a talk of action or there is an anticipation of action. कि इंडिया कुछ तो मिलिट्री एक्शन लेगा इस बार क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉक्स द मार्केट हैज फॉलन. तो अगर एक्चुअली कुछ एक्शन होता है, लेट्स से इंडिया डज सम सर्जिकल स्ट्राइक या सम मिसाइल अटैक, वी डोंट नो व्हाट एवर एक्शन दे टेक, तो उस वक्त मार्केट का वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा और मार्केट का रिएक्शन काफी शार्प रहेगा. सो देयर विल बी or there can be a huge fall. Okay. What can be done in such scenario? Let's understand. So before we move ahead, some of you know me, some of you don't know. So my name is Ritin Chaudhary, and I run the firm RGS Consulting from 2017 for almost 9 years, and we have various investment services, trading services, etc. Okay, just a quick background about myself. And before starting the wealth management business, I worked in the IT industry also for almost 15 years. Okay. So as I said, we'll discuss these topics, the market volatility, what type of volatility we can expect. For that, we'll have to go to the past events. Then diversification of investments, how diversification can basically help you to Am I audible now? There was some technical issue. Thanks. Then one of the important points for this particular market scenario is utilizing hedging techniques. How hedging techniques can basically help you to navigate in this type of market. How hedging techniques can help you basically protect your investment, number one. And number two, it's quite possible to make money also in this kind of market situation if you know the hedging techniques, the derivative techniques.
And then maintaining liquidity and flexibility, because always in any market volatility or market crash possibility, one should look at having some kind of liquidity. Go ahead. So as I said earlier, we have to look at the market situation in the past. Okay, just to try to understand what can be expected in the current environment. We always have to look at the past reference, and the recent references which are there. The last one is of course the Israel attack. When the Hamas terrorists attacked Israel, what was the reaction? How was the reaction of the market on that day? Then when the Russia-Ukraine war started, okay, when Russia attacked Ukraine again we'll have to look at the reaction in the market. Of course, these were global events, but even in those even in those events also, there was a big impact in the Indian market. So definitely we should look at it. Then of course the Indian event of Balakot strike, the surgical strikes that India did in 2019. At that time also, I remember I was trading on that particular day, and there was huge volatility in the market. Okay, so India did the strike, and then that Indian pilot Abhinandan, I guess, he got caught by the Pakistanis. So there was a lot of volatility because of all these events, right? So all this will happen or can happen in case there is any military action in this particular instance. So for this, we'll have to go to the charts, okay, and we'll see what happened on those particular days and dates. That is what will give us some clarity. So first, we'll look at the Israel event, which happened on October 7th. Okay. October 7th. So this is trading view. Here we can see the charts. Okay. 2023, October 7th. Now, October 7th was a Saturday. Obviously, Indian market was closed. So our market reaction was on 9th. Okay. So let us look at the stock movement or Nifty movement on 9th of October. 9th of October 2023. Okay. There you go. On 9th October, there was a gap down and a very big gap down. Now, if you see 6th October, Friday, the market close was around 19,650. Okay. And on Monday, 9th October, the market bottom was 19,480. So 19,480 was the market bottom on 9th of October. So the previous close was 19,670, or previous high was 19,670, and we saw a bottom of around 19,450. So around 200 points fall. So more than 1% fall. Although when we can't say it was a big fall, so to say, but quite a significant fall, especially in case somebody was having derivative positions. काफी बड़ा ये फॉल था, और उसके बाद में थोड़ा मार्केट रिकवरी हुआ. नाउ व्हाट हैपेंस, we don't have to, or we cannot just rely on the one day action. Okay, if you see here, there was a fall and then there was a market recovery, but then there was of course Israel response and then US getting into the picture, then Iran, and also the things got started getting complicated, right? उसके बाद में मार्केट में और फॉल आया. So as we move towards the end of October, market fell all the way up to 18,838. तो जो 19,600, let's say roughly 19,700 के आसपास मार्केट था, it went all the way up to 18,800. So almost 900 points, which is like around
4% ड्रॉप ऑन निफ्टी। अभी 4% ड्रॉप जब निफ्टी में आता है, ओके, निफ्टी इज द इंडाइस इंडाइस ऑफ द टॉप 50 स्टॉक्स। तो जब निफ्टी में 4%, 5% फॉल आता है, तो आपके जो स्टॉक्स होते हैं उसमें 20%, 25% फॉल आ सकता है। 15 से 20% तो आराम से आता है। आई मीन वी कैन लुक एट सम स्टॉक एग्जांपल इन दिस पीरियड। रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। Let us see what Reliance did at a time. Then we would have the chart for that time. But anyways, the point is, what I'm trying to say is, whenever this type of event happens, the movement will happen over a period of time, over a period of 4 or 5 days, over a period of 2 weeks, over a period of maybe 1 month. Okay. And then accordingly, we have to respond. If we look at the Russia event, which was 24th February 2022, let me see if we get this chart for Nifty. It was fine. Yeah. Here we can see on 24th Feb, the attack was done by Russia on Ukraine, and after that, again, there was a severe fall in the market. Now, again, this was not an Indian issue, this was a global issue, but still our market gave a sharp reaction. Slow. Market at that time in January 2022 itself was little bearish, क्योंकि वो एंटिसिपेशन था कि ये अटैक हो सकता है। जब एक्चुअली अटैक हुआ, तो उसके बाद में काफी फॉल हुआ। अब फॉल के बाद में रिकवरी भी हुआ, बट देन एज वी नो देयर वर थिंग्स गोइंग ऑन। वॉर अभी एस्केलेट हो रहा है, डीएस्केलेट हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, सो लॉट ऑफ वोलेटिलिटी वाज देयर। ओके, द रीजन आई एम शोइंग यू ऑल दिस, similar situation or similar market movement can be expected in this particular event currently। अभी हम लोग अगर इंडिया का बालाकोट एयर स्ट्राइक का अगर एग्जांपल देखते हैं, ओके, so the Balakot airstrike was in response to that Pulwama attack. I guess there was an attack on in Pulwama on military setup,
एंड दैट हैपेंड ऑन 14 फरवरी 2099 2019। अभी 14 फरवरी 2019 को ये अटैक हुआ था, और सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था वो 26 फरवरी को हुआ था। ओके, यानी ऑलमोस्ट आफ्टर 2 वीक्स। अभी हम पहलगाम का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो पहलगाम का जो अटैक हुआ है 22 अप्रैल को हुआ है, लास्ट वीक। ओके, और दिस ट्यूसडे। सो द रिएक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट will come maybe in a week, 2 weeks, 3 weeks, we don't know. ओके, बट वो जब रिएक्शन आएगा तो वो ऑल ऑफ ए सडन आएगा। इफ इट इज ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, तो फिर बहुत बड़ा मार्केट में उस वक्त फॉल आएगा, 300 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट इवन। आई रिमेम्बर ड्यूरिंग द बालाकोट स्ट्राइक्स द फॉल वाज लाइक ऑलमोस्ट 4%, 5% इन वन सिंगल डे। तो अगर 5% का अभी के हिसाब से देखते हैं, करंटली द मार्केट इज लाइक अराउंड 24,000। ओके, तो अगर 5% अगर बोलते हैं तो 1100 1200 पॉइंट्स का, 1300 पॉइंट का फॉल निफ्टी में आ सकता है, तो इट विल बी अ ह्यूज फॉल। तो 300 पॉइंट से लेके तो 1200 पॉइंट्स तक का रेंज हमको पकड़ के चलना पड़ेगा, कि अगर ये स्ट्राइक होता है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, इवन मार्केट आवर के बाद में भी होता है, तो दूसरे दिन जब मार्केट ओपन होगा तो गैप गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। ओके, तो उसका रिएक्शन तो आएगा मार्केट में। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो अटैक कब होगा वी डू नॉट नो। ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल कीप इट सीक्रेट, so we have to be prepared. Okay, and that is the whole idea of today's discussion, कि ये अटैक जो है इंडिया का, अभी ये इस वीक में होता है, अप्रैल लास्ट वीक में होता है, मई फर्स्ट वीक में होता है, मई सेकंड वीक में होता है, वी डोंट नो। बट अगर होता है, देर इज अ 90% चांस दैट इट विल हैपन। आई एम नॉट हैविंग सम hotline with Modi ji. I do not know that it's 100% going to happen. We are market players and we have to be prepared, and we have to basically टेक एक्शन अकॉर्डिंगली इन एंटिसिपेशन। होगा कि नहीं होगा, शायद नहीं होगा, नहीं हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है, मार्केट बढ़ आगे जाएगा। लाइक आई फेल्ड वेरी बैड कि थर्सडे फ्राइडे इंडियन मार्केट वाज डाउन, पूरा ग्लोबल मार्केट अप था, बट बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड इशू ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, इंडियन मार्केट वाज डाउन अननेसेसरी, द इंडियन मार्केट इज सफरिंग। सो दैट इज द सैड पार्ट ऑफ इट, बट देन जो हो रहा है वो हो रहा है, एंड वी हैव टू टेक एक्शन अकॉर्डिंगली एज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। ओके, so any questions so far? I hope everybody with me. I'm just trying to give the reference of past events and what and when we can expect in the market. अब ये what तो anticipate कर सकते हैं, when we do not know. Okay, so what will be the strategies to overcome this situation, right? अभी सबके माइंड में क्वेश्चन यही है कि how do we address this situation? So there are various things that need to be understood. ये हमने देख लिया how the market response was रशिया के टाइम पे, इसराइल के टाइम पे क्या था, बालाकोट स्ट्राइक के वक्त कैसे हुआ था। डू नॉट हैव द चार्ट्स फॉर 2019 राइट नाउ, बट आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। अभी पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद में क्या होगा, सो वी हैव अ रेंज कि मार्केट का रिएक्शन क्या हो सकता है, बट वी डू नॉट नो व्हेन दैट विल हैपन, वेदर इट विल हैपन इन next week or next to next week, whether it will happen in 1 week or 2 weeks, we do not know. What are the mitigation tactics for that? So, uh, if you are following my old videos, etc., I always told that you have to have a diversification of investments. Okay, तो ये तो हमेशा के लिए है, not for this only for the current situation. You should always have a diversified portfolio. When I say diversified portfolio, you should have a combination of large cap stocks, small cap stocks, mid cap stocks. अभी क्या होता है, बहुत बार लोग ग्रेडी हो जाते हैं। ग्रेडी होने की वजह से दे विल पुट ऑल देयर मनी इन द स्मॉल कैप स्टॉक्स, तो वहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। बट इफ यू डाइवर्सिफाई अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, तो आपका रिस्क कम हो जाता है, और आपके पोर्टफोलियो में जो करेक्शन आने का चांसेस होता है वो लेस होता है।
सो डाइवर्सिफिकेशन इज समथिंग दैट वी शुड ऑलवेज लुक एट. अगर आपका पोर्टफोलियो आज की तारीख में डाइवर्सिफाइड नहीं है, यू स्टिल माइट हैव टाइम ऑफ 2 days 3 days, कर लो आप. ओके. So as I mentioned, diversification gives you better risk management, balanced asset allocation. What are the type of assets that you can consider as an investor? Okay. So this is a general slide, but we can always look at stocks. Then we can always look at bonds. आप government bonds लेते हो, sovereign gold bonds अभी बंद हो गया. But if you are investing in certain government bonds, तो आपको रिटर्न मिलते रहते हैं. Plus there is a safety margin. Then commodities. अभी commodities is an interesting point here, क्योंकि what type situation होगा, तो डेफिनेटली इंडिया में गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, इंडियन कमोडिटी मार्केट में, और क्रूड ऑयल का भी प्राइस बढ़ेगा. ओके. तो अगर आपके पास में एक्सपर्टीज है, तो यू कैन लुक एट टेकिंग सम पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस, सॉरी लॉन्ग पोजीशंस. आप गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, क्रूड ऑयल में लॉन्ग पोजीशन दे सकते हो. तो उससे क्या होगा कि अगर आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो डाउन भी जा रहा है, लेट से आपका 1 CR का पोर्टफोलियो है एंड इट इज गोइंग डाउन बाय मे बी 10%, 20%, 25% बिकॉज ऑफ द इवेंट, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप कमोडिटीज में, गोल्ड में, क्रूड ऑयल में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो. एंड दैट विल बेसिकली हेल्प यू टू मिटिगेट द लॉस. ओके. लॉस क्या है कि लॉस नोशनल रहेगा. इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपको लॉस बुक करने की जरूरत है. बाय गॉड्स ग्रेस थिंग्स कैन बिकम नॉर्मल इन फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स. तो जो भी आपका पोजीशन डाउन है वो रिकवर हो जाएगा. बट फॉर द मोमेंट जो आपका पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है, उसको अगर आपको मिटिगेट करना है, वो अगर लॉस आपको कंट्रोल करना है, then you can look at taking positions in the commodities, especially gold और crude oil में. डेफिनेटली गोल्ड बढ़ेगा, क्रूड ऑयल बढ़ेगा. गोल्ड ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे भी, ग्लोबल इवेंट की वजह से भी बढ़ा हुआ है. बट इंडिया में अगर कुछ ये जियो पॉलिटिकल मैटर बढ़ता है, तो गोल्ड और कमोडिटीज बढ़ेंगे. सो देर इज अ क्वेरी अबाउट गोल्ड. हैज गोल्ड ऑलरेडी रीच्ड पीक? We cannot say for sure whether it has already reached peak, but then yes, of course, it is currently highly overbought. तो करंटली ग्लोबल मार्केट में तो गोल्ड में करेक्शन हो रहा है. ओके. तो इट माइट स्लाइटली गो डाउन फर्दर इन द ग्लोबल मार्केट, बट आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली फ्रॉम द इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू currently because of this Pahalgam issue. So from the global market point of view, it is expected to go a little bit down. From the Indian market point of view, for your portfolio protection, currently I am saying, आप गोल्ड में as a hedge you can take some long positions. When I say long positions, maybe you can take long positions using futures, और आप long position using options भी ले सकते हो if you have that expertise. So that's about the diversification that we can do. Then another general point is that always, I mean, if possible, for especially for HNI, ultra HNI type of investors, you can do some global diversification also. When I say global diversification, you can buy outside India assets also. जैसे आप दुबई के कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या यूएस के आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, यूएस के ईटीएफ्स वगैरह खरीद सकते हो. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू बेसिकली डाइवर्सिफाई एंड मिटिगेट योर रिस्क. So again, from the diversification point of view only. और एक पॉइंट होता है कि यू कैन गो फॉर सम बेट्स, सेफ बेट्स. सेफ बेट्स यानी क्या है कि एफएमसीजी स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, और यूटिलिटी स्टॉक्स, ये सब स्टॉक्स थोड़े लो रिस्क रहते हैं इन अ मार्केट वोलेटिलिटी सिचुएशन और मार्केट फॉल सिचुएशन. तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा रिस्क कम रहता है. वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट गोल्ड. तो गोल्ड अगर हम लेते, इफ यू आर एबल टू टेक गोल्ड पोजिशंस इन गोल्ड एंड क्रूड ऑयल, so that will again help you to mitigate the losses or reduce the losses. Then another point is hedging techniques. I spoke about it earlier. Hedging का क्या मतलब होता है कि लेट्स से यू आर हैविंग अ निफ्टी पोजीशन, आपने निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी बीस वगैरह लेके रखा है. आपके पास में 1 CR का निफ्टी का म्यूचुअल फंड है. ओके. ऑब्वियसली अगर निफ्टी डाउन जा रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू भी नीचे जाएगा. व्हाट वी डू एज पोर्टफोलियो मैनेजर्स और फंड मैनेजर्स, हम लोग यहाँ पे हमेशा हेजिंग करके रखते हैं.
तो हेजिंग से क्या होता है कि लेट्स से अगर आपका 1 CR का 10 लाख 20 लाख रुपीज डाउन जाने वाला है, तो वो 10 लाख 20 लाख आप हेजिंग पोजिशन पे कॉम्पेंसेट कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू बाय पुट ऑप्शंस। ओके, अगर आप निफ्टी के पुट ऑप्शंस खरीदते हो, अभी एडवांस में खरीद के रख सकते हो। तो इट इज लाइक एन इंश्योरेंस, इट इज लाइक एन इंश्योरेंस प्रीमियम दैट यू आर पेइंग, and those positions will safeguard you in case of a huge fall. Not only safeguard you, they can give you profit also. Let's say आपने 5 लाख रुपीज डाल दिए आउट ऑफ 1 CR, लेट्स से यू आर टेकिंग 5 लाख रुपीज ऑफ ऑप्शन पोजिशंस। ओके, अगर बड़ा फॉल आता है तो 5 लाख का 20 लाख 25 लाख भी हो सकता है। तो आपका लॉस हो रहा है लेट्स से 15 लाख का, बट आपका प्रॉफिट हो रहा है 25 lakhs का। So it will so that strategy of buying options, it will not only give you protection against loss, it can give you profit also. तो ये तो hedging की बात हो गई। Apart from that, if you are a derivative trader and if you have the proper expertise for that, you can just have a short positions. Okay, जैसे RGS Alpha जो अपना ग्रुप है, in we do the market discussion. I told people on Friday that carry short positions for Monday, and there is a heavy possibility that on Monday, that is tomorrow, we will see a market gap down. अगर गैप डाउन नहीं भी होता है फिर भी फॉल का अच्छा चांस है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कैरिंग दो शॉर्ट पोजिशंस पीपल विल बी एबल टू मेक मनी ऑल्सो बिकॉज इवन इन द मार्केट फॉल। तो आरजीएस का यू नो द और मोटो इज प्रॉफिट इन ऑल सीजन्स। तो मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है रेंज बाउंड है, इन एनी सिचुएशन वी शुड बी एबल टू मेक द प्रॉफिट। सो दैट इज व्हाट वी ऑलवेज ट्राई, and mostly we are able to do that, right? So understanding hedging and its benefits, I already told you, hedging आपको एक तो आपके पोर्टफोलियो वैल्यू को प्रोटेक्शन देता है। सेकेंडली, इफ यू आर एबल टू टेक द शॉर्ट पोजिशंस तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है अगर मार्केट गिर रहा है। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल्स ऑब्वियसली यू विल हैव टू गो इनटू द डीप information. For that you can go through my YouTube videos or you can attend one of my trainings for that. So future and option is something that we can use for hedging. Okay, so before we move into the details of future and option, I wanted to quickly show you details about RGS investment services. So we have these different services which are available: portfolio management, consulting, fixed return or fund management services. So you can consider one of these services. In case you want more details, we can discuss one on one. So there are three things that we can do in terms of hedging. You can buy options. Okay, you can buy a put. It is the very simplest thing to do. Then you can also do option writing. Option writing यानी क्या है कि आप कॉल सेल करो with a hedge, of course. You sell a call with a hedge. उसमें आपको डीके का बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपका डायरेक्शन बराबर है, मार्केट फॉल अगर होता है तो सिंस यू सोल्ड कॉल्स तो उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। आप फ्यूचर्स भी सेल कर सकते हो, बट सेलिंग फ्यूचर्स इज अ हाईली आई विल से स्किल जॉब। आपको अगर आपका प्रॉपर उसमें इंफॉर्मेशन है, एक्सपर्टीज है, तो यू कैन डू दैट। एंड वी स्पोक अबाउट गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। ओके, तो गोल्ड और क्रूड ऑयल में अगर आप लॉन्ग पोजीशंस लेके रखते हो एमसीएक्स के ऊपर, जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया का, तो देयर ऑल्सो यू कैन मेक profit. I mean, I'm not just talking about protection of your portfolio value, but there is an opportunity to make profit also because of this market fall or market volatility. Okay. तो मार्केट की कंडीशन जो भी है, अगर आप रेगुलर प्लेयर हो मार्केट में, तो यू शुड बी ऑलवेज स्टडिंग दी expected movement in next 1 week, 2 weeks, and accordingly your positions like you should try to make some money out of the market movement. That is always the idea. If you are a long term investor, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको हमेशा एक थोड़ा सा कैश रिजर्व में रखना चाहिए। ऐसे रिजर्व में इफ यू आर हैविंग अ पोर्टफोलियो ऑफ लेट्स से 100 रुपीज, और सिंप्लिसिटी से आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ 100 रुपीज, तो 100 रुपीज में का 20-25 रुपए आपको हमेशा स्पेयर रखना चाहिए। ओके, आइदर यू कैन कीप इट जस्ट स्पेयर आइडल और यू कैन पुट इट इन अ लिक्विड म्यूचुअल फंड। तो जब ऐसा बड़ा मार्केट फॉल आता है तो यू विल हैव सम फंड्स इन हैंड एंड यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द मार्केट फॉल। ओके, अगर कोई मार्केट फॉल आ रहा है, आपका निफ्टी 5% 10% डाउन जा रहा है, लॉट ऑफ स्टॉक्स विल गो डाउन, तो ये सिचुएशन में अगर आपके पास में स्पेयर फंड्स है, ऐसे इफ यू हैव सम ड्राई पाउडर, यू कैन यूटिलाइज दैट। तो उस तरीके से भी आप
इसका बेनिफिट ले सकते हो. सो देर आर वेरियस वेज यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस मार्केट मूवमेंट. आप हेजिंग करके आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करो. आप फ्यूचर्स में ऑप्शंस में पोजीशन लेके प्रॉफिट भी कमा सकते हो. अगर आपके पास में स्पेयर फंड्स है तो मार्केट फॉल का आप जो बाय द डिप जो सिस्टम होता है, मार्केट फॉल का बेनिफिट लेके यू शुड बी एबल टू डू सम बाइंग ऑफ सम क्वालिटी स्टॉक्स. अब ये क्वालिटी स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वालिटी स्टॉक्स का बाइंग आप लोअर वैल्यू पे कर सकते हो. सो देर आर दीज आर द वेरियस वेज one can look at to take benefit of this market volatility or the market fall. बाद में एक कंसेप्ट होता है इन्वर्स ईटीएफ्स का. अभी ईटीएफ इंडिया में नहीं है. आई मीन फॉर द मार्केट गोल्ड के ईटीएफ्स है. बट स्पेशली इन द यूएस मार्केट, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया. यूएस मार्केट में ईटीएफ्स होते हैं. ईटीएफ्स आर अवेलेबल फॉर गोल्ड, एसपीएक्स एंड डिफरेंट इंडाइसेस एंड लॉट ऑफ एसेट क्लासेस. तो ईटीएफ में क्या होता है कि आपका रिस्क टिपिकली कम होता है कंपेयर टू फ्यूचर एंड ऑप्शन. If you are buying inverse ETF, let's say अगर market fall expected है and if you are able to buy inverse ETF, यानी वो inverse ETF आपको fall की situation में profit देगा. Okay. So if you are able to buy the inverse ETFs again, you can make some good money. अभी ये इंडिया में applicable नहीं है, but I am just sharing as a information. Especially for US market, we manage portfolios for US also. तो अगर वहाँ पे गिरता है market, तो we buy the short ETFs and we are able to make some money out there. तो मेंटेनिंग लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एज ए सेड अर्लियर, आपको हमेशा थोड़ा 20-25% फंड अवेलेबल रखना चाहिए. बिकॉज मार्केट में कभी भी बड़ा फॉल आ सकता है. मार्केट आपको कितना भी अच्छा लगे, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन, बट यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो. तो हमेशा आपको एक 20%, 25% बफर फंड, रिजर्व फंड रखना चाहिए, विच यू कैन यूटिलाइज इन केस ऑफ अ मार्केट फॉल और इन केस ऑफ मार्केट क्रैश. तो उससे क्या है कि आपको यू विल हैव पीस ऑफ माइंड कि भाई ठीक है, अगर मार्केट बड़ा गिरता भी है तो आई विल हैव सम रिजर्व अरेंजमेंट. Then one investment guideline which I normally give for portfolio management for people who are managing their portfolio on their own. हमेशा आप जो भी स्टॉक्स बाय करते हो, यू शुड बाय इट इन द 1:2 रेशो. ओके. व्हाट इज 1:2 रेशो? यू शुड ऑलवेज हैव बाय वन एंड बाय टू लेवल. लेट्स से अगर आपका बाय वन लेवल 100 रुपीज है एंड बाय टू लेवल लेट्स से 80 रुपीज, सो एट बाय वन लेवल यू बाय वन यूनिट एंड एट बाय टू लेवल ऑफ 80 रुपीज यू बाय टू यूनिट्स. ओके. तो इससे क्या होता है कि अगर मार्केट फॉल आ रहा है तो आपके पास में हमेशा रिजर्व फंड रहेंगे. टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड प्रोसीजर और गाइडलाइन, देन नॉर्मली डू नॉट हैव एक्सपोजर ऑफ मोर देन 10% इन वन सिंगल स्टॉक. कोई भी आप एक सिंगल स्टॉक में कितना भी वो अच्छा लगे, डू नॉट टेक मोर देन 10% पोजिशन. And then similarly, as you have buy one and buy two levels, similarly you should have target one and target two levels for the selling point of view also. Okay, so if you follow some of these guidelines for the portfolio, you will typically be safe. So I have covered most of the points from my side. If there is any query, we can take it or we can wrap up the session here. You can put your query in the chat box. Anybody has any query? So many of you are already there. If you are not already joined, you are welcome to join this RGS Alpha WhatsApp group. Here we do the market discussion every day, and you will have updates, tips, etc. also for trades and all. Just by being part of the group, you can actually look at making some good profits. Okay. So there is a query about commodity and crude oil. So what do you recommend? Whether you recommend by selling futures or buying puts? Okay. So see, this is a complex question. It depends on your expertise. आपको trading का कितना expertise है future market में, options market में. If you are a highly expert trader, then you can go for futures. आप futures sell करो and with the help of technical analysis, you can understand the direction, support, resistance, etc. You can make good money. That is the one option. Second option is that you can just buy puts. Okay, अगर आप puts buy करते हो तो आपको unlimited profit है and limited loss है. So that is third option. And another option is an option writing. Option writing is basically you sell the call with hedge. Okay.
So as we people, fund managers or portfolio managers, we typically prefer going for option riding. So we will, I personally will recommend do option riding. ऑप्शन राइटिंग करोगे तो आपको कि हेज पोजीशंस में भी रिस्क कम कम रहेगा, ऑप्शन पोजीशंस में भी रिस्क कम रहेगा. एट द सेम टाइम देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मेक सम प्रॉफिट आल्सो. So option writing is what I will recommend. Baki you can do futures also, you can do option buying also. It depends on your trading style. So that's it from my side. Thanks everybody for joining. Wish you all safe and profitable investments. Okay. Thank you. Bye.